चैनल और इस वाली वीडियो में हम रिएक्ट करने जा रहे हैं 7 रूबिक्स क्यूब वर्ल्ड रिकॉर्ड रोबोट्स और ये रोबोट्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो वेलकम टू जीएससी क्यूबिंग एंड लेट्स स्टार्ट। There are many robots that can solve the Rubik's Cube, but in this list we are going to see only those which broke world records and तो इन्होंने कहा है काफ़ी सारे रोबोट्स हैं जो रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर पाते हैं, बट ये दिखाएंगे सिर्फ जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े हैं और जो थोड़े यूनिक हैं। those which are unique in some ways. Cubestomer 3 पहले क्यूब का नाम है। Powered by Samsung Galaxy S4, Cubestomer Okay, this cube is powered by Samsung Galaxy S4. 3 robot shattered the Guinness World Record for solving a Rubik's Cube in 3.253 seconds in 2014. Okay, Cubestomer 3. The robot was built by Mike Dobson and David Gilday. रोबोट बना था माइक डॉबसन और रॉबर्ट गिल्डे, शायद से यही नाम है। The robot was built by Mike Dobson and David Gilday, creators of Cubestomer 1, Android Speedcuber, and Cubestomer 2. ओके, तो इन्होंने क्यूबस्टॉर्मर 1 और क्यूबस्टॉर्मर 2 दोनों इसके पहले बना रखे हैं। The custom app developed for the smartphone uses the phone's camera to capture images of each face of the Rubik's Cube, which processes to determine the scrambled colors. ओके, तो फोन की ऐप है और वो कैमरे से कलर को वो क्यूब के कलर को लेती है और उसको डिटरमिन करके प्रोसेस करती है। To solve the cube, the app uses an advanced Kociemba's two-phase algorithm. ओके, क्यूब को सॉल्व करने के लिए जो ऐप है वो कोसिएम्बास टू फेस एल्गोरिथम यूज करती है। ओके, जो नेक्स्ट क्यूब है वो है two-phase algorithm. जो नेक्स्ट क्यूब है वो है पॉल रोज और जे फ्लैटलैंड्स रोबोट। 3, 2, 1, हो ओके, तो ये स्लो मोशन है 0.25x स्पीड। अगर मैं इसको इधर से जाके प्लेबैक स्पीड से एक और बारी 0.25 पे ले जाऊं फिर कैसा दिखेगा? See the cube, guys. Oh, okay. That turns pretty well. डबल टर्न्स, डबल लेयर में मूव हो रही है। ओके, डबल टर्न्स भी करता है, डबल लेयर टर्न्स, तो भाई काफी ज्यादा 0.900। This Rubik's Cube solving robot was developed by 2 software developers. तो ये जो रूबिक्स क्यूब है ये 2 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने बनाया था और देखो भाई क्या इमेज आई है। Paul Rose and Jay Flatland. Paul Rose On February 5th, 2016, the machine broke the 2.39 seconds. February 5th, 2016. February 5th, 2016. The machine broke the 2.39 seconds world record held by Zackary Gromko's robot by solving the cube in 0.09 seconds. 0.09 4 USB seconds, webcams are used to help determine the state of the cube. The camera data is fed into software running on a Linux PC that determines the cube state, and this in turn is relayed to the Kociemba Rubik's Cube solving algorithm. तो ये भी कोसिएम्बा रूबिक्स क्यूब सॉल्विंग एल्गोरिथम यूज करता है। The algorithm then determines a set of moves to solve the Rubik's Cube, and the instructions are sent to the stepper motors. Okay, तो let's move on to the next one, Sub 1 Reloaded. Oh, क्या नाम है? Built by Infineon's engineer Albert Beer from Germany. Oh my god, gee. Oh. Did you saw the solve? Built by Infineon's engineer Albert Beer from Germany. The Sub 1 नहीं मजाक हो रही है,
Reloaded smashed 0.637 the seconds. Guinness World Record by becoming the fastest robot to solve a Rubik's बटन Cube दबाया with तभी just ये भी डबल 0.637 टर्न्स seconds कर रहा in है November 2016. और ये नवंबर 2016 किया और स्लो This मोशन breaks the 12x. previous record of 0.887 seconds achieved by an earlier version of the same machine ओके तो इसका पहले का वर्जन ये था जो थोड़ा स्लो था और इसके बाद और फास्ट हो using a गया different processor. While using a every different Rubik's processor. Cube can be solved with just 20 movements, Albert did not design the computer to use the fewest moves. Instead, he programmed it to achieve the best time. ओके तो जो इन्वेंटर हैं उन्होंने इसको जो फ्यूएस्ट मूव्स होते हैं गॉड नंबर 20 उस पे नहीं प्रोग्राम किया था इन्होंने इसको सबसे अच्छा टाइम लेने को प्रोग्राम किया allowing था the Sub 1 बेस्ट टाइम Reloaded to take extra moves to reach its goal. The computer received 2 pictures of the cube, identified the color of each piece, and calculated a solution with Tom Rakiki's extremely fast implementation of Kociemba's इतना two-phase कुछ पढ़ा है algorithm. ओके कैपेसिटर्स पड़े हैं काफी वायर्स हैं ओके तो ये देखो ये जो है ना ये जहाँ मेरा कर्सर है ये भी हिल रहे हैं these also move अभी देखना ये देखो ये भी मूव करते हैं ओके जो नेक्स्ट क्यूब है उसका नाम है Rubik's contraption. So let's see this one. Solving in 3, 2, 1. भाई 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 ये क्या है ओ भाई ये क्या है ये सच्ची में मजाक हो रहा है भाई Solving in 3, 2, 1. Currently, Rubik's contraption is the fastest robot to solve Rubik's Cube. Developed by MIT graduates Ben Katz and Jared DiCarlo. जेरेड डिकार्लो और बेन कैट्स ने इसको बनाया है दोनों Developed by MIT MIT graduates हैं graduates Ben Katz and Jared DiCarlo, the robot solved the ये देखो 1000 frames per second Rubik's Cube in just 0.38 seconds in 2018. oh भाई साहब this is faster than the 2x2 world record The robot is built from custom parts that are easily acquirable. It uses 6 Carl Morgan's Servo Disc U9 series motors. क्या क्या It uses 6 Carl Morgan's 6 Carl Morgan's Servo Disc U9 series servo motors, disc motors which can be obtained relatively cheaply on eBay, as well as optical encoders on the back, also from eBay. optical To detect the current state of the cube, a pair of PlayStation 3 eye webcams were positioned at PlayStation 3 के webcam लग रखे हैं इसमें current state of the position के cube. लिए A pair of PlayStation State of the 3 cube eye के लिए webcams were positioned at opposite corners of the cube, और real time allowing टूट each गया camera to observe 3 faces. A इतना special fast है टूट भी software जाता was कभी कभार developed to identify all the colors, build a description of the cube, and pass it to the Min 2-phase solver, which implements Kociemba's 2-phase algorithm. ओके तो नेक्स्ट रोबोट है डैक्टी Unlike other Dactyl. Rubik Cube solving robots, this humanoid robotic hand is not designed specifically for solving Rubik's Cube. It is designed for general purpose self-learning robots. It is called Dactyl. अरे भाई क्या Developed solve by कर रहा है artificial intelligence research organization 100 OpenAI. ओपन एआई ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये क्या लेके आ रखा है अच्छा वो सॉफ्टवेयर पेन perturbation Dactyl has learned to solve a Rubik's Cube one-handed. It is not as fast as those purpose-built Rubik solvers, because the robotics team at OpenAI has very different ambitions. तो जो इनकी टीम है उनके काफी डिफरेंट एम्बिशंस हैं और इतना फास्ट वो नहीं बना सकते थे इसको 100 सॉल्व करने के They लिए are रोबोट है भाई trying to build something that is much more general in its scope, similar to how humans and how human hands can do a lot of things, not just a specific task.
ओके गाइस, सो नेक्स्ट है और लास्ट इस वीडियो का, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सेल्फ सॉल्विंग रूबिक्स क्यूब। ओके, अरे भाई हवा में कैसे आया ये? You तो might भाई think वो that वर्ल्ड there are रिकॉर्ड some वाले से भी camera सही है। tricks or visual effects in this video. Well, you are not alone. Many people thought so too when the Japanese inventor Human Controller posted this video on his YouTube channel. ये हवा में कैसे है? This is a real Rubik's Cube that can completely solve itself while floating in midair. ओ भाई, With the help of the first two layers, or the F12 F2L algorithm, the Arduino board at the heart of the cube controls the कोर पे आर्डुइनो है 3D printed custom cores full of servo motors that spin जापान के any of क्रिएटर its हैं, multicolored इन्वेंटर sides. हैं। ओ भाई, क्या सही चीज बनाई है यार। The levitation was made possible by installing powerful magnets in both the cube and the table under it. ओके, तो जो लेविटेशन है ये मैग्नेट्स की हेल्प से हुई है। मैग्नेट्स क्यूब में भी और बोर्ड में भी है। ओ भाई, F12 यूज करता है ये, सही है। आखिरी पेयर शायद नहीं, अरे कंप्लीट। ओके गाइस, तो दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे। और आखिरी रोबोट था हमारा द सेल्फ सॉल्विंग अमेजिंग रोबोट। सो गाइस, दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग अ जेएससी क्यूबिंग वीडियो। और इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, टैप द बेल आइकन। प्लीज सपोर्ट दिस चैनल एंड जस्ट डू इट, गो लाइक।